Good evening, everyone. So, here we are going to start economic course for the UPSC examination in various fields. Like UPSC takes the examination of CSE, EPFO, CDS, and everything. This economic understanding will be helpful for every examination. So, I'm going to start the economics for UPSC, right? It is so for agenda for today for the today or the first session is we will understand what is the methodology for UPSC examination. In this course of economics for UPSC, we will cover CSE portion also, various examination conducted by UPSC, EPFO also, CAPF also, and more. You can also rely for RBI, regulatory bodies, usually for the conceptual understanding of regulatory bodies subject. So I hope I'm clear till now. So in this class, in the first session of economics, right, we will have a discussion first on understanding methodology methodology of reading for UPSC, right? The second point will be importance of economy in UPSC, right? The third point will be syllabus, as I'm covering for CSE portion also. So syllabus for prelims. This course is basically I will give a crux of the main syllabus, that the how questions are also coming in the main syllabus too. Not exact that it is a mains course, but it will be helpful for prelims and for conceptual clarity, right, of economic subject, and it will clear this three examination, and also it will create a good base in your regulatory bodies paper like RBI, SEBI, various examinations, NABARD. In any of the paper, you can watch this course, right? So the fourth point that we are going to teach is role of PYQ. It is very important to judge the role of PYQs in economics for the various UPSC examinations like CSE, EPFO, CAP, and also in some of the questions like regulatory bodies paper. And the fifth point is that what you can accept accept what you can accept from this course. Is it clear? Is the coverage of whole syllabus, right? Here also, the current affairs in economics will also be covered. Current affairs in economics will also get covered, right? Covered. And the seventh point is approach to learn economy. To learn economy, the subject.
learn economy. So this is the agenda for the first session that I'm going to take. I will make you understand this much things, right? And you will come to know what kind of a questions is UPSC examination or regulatory bodies is asking in the terms of economics paper. So I guess the following points are being clear to all of you. So I'm moving forward. Okay, so you can make a note. Fine. So first I will talk about what is understanding. The first point I will clear, understanding methodology for the subject for the economics, right? What is the understanding of methodology? What kind of a methodology UPSC usually asks for the subject economics? See, when we were in school, right? If a question can be asked, when was the third battle of Panipat held, right? So we see everyone went to class 10. So this is a history question, but I am telling you the methodology for the economic subject, especially methodology for UPSC I am talking about, right? In school, they ask like a question, when was the third battle of Panipat held? So you have to learn date, exact date, right? In school. When you go to college, and if you are from arts background, right, then the same question can be asked. Events held on third battle of Panipat. Panipat, right? So they are asking, see, the journey begins from school to college. The question, friend, in school, they were asking the exact date, but in college, they were asking the events happened in the third battle of Panipat. Is it clear till now? Is it clear? So now, what is the methodology of asking questions in UPSC examination? First, you should know this, right? They will ask you, they will ask a question like this. Ki, you know the first battle of Panipat, second battle of Panipat, third battle of Panipat, right? They will ask you why was so many battle held in battle held in Panipat. So you can have a differentiation, right? You can differentiate from school, college, and asking questions in UPSC. So that's why I told you the understanding the methodology for the economics, any subject in UPSC. Just in this course, we are discussing about economics. I've given an example of a question. Through this, you can understand the methodology of asking question in UPSC. They are not asking the events, they are not asking the date, they are asking why, they are asking opinions. Why was so many battle held in Panipat, right? So for me, UPSC examination is conceptual understanding, conceptual understanding, right? Right? Plus reading. This will help you in clearing any UPSC paper, right? The questions are being asked in such conceptual understanding of the subject plus reading multiple times, and this, the addition of this two, we call it recalling. But at that time, you should recall, at that time, you should recall the events also, date also, and why it, you should, from learning the facts, like in school, in college, why that, what kind of events were happened in the third battle of Panipat. उसके बाद आपको यूपीएससी ये पूछ रहा है कि battle held in Panipat, why so, they are asking opinion also. Is it clear?
So you should remember the date also. You should remember the events also. And according to this fact, you should make an opinion, right? And this what UPSC is asking in any of the subject. So I hope the understanding of the methodology is being clear. Is being clear. कि why I'm telling why a methodology is needed in for the preparation of UPSC. कोई भी एग्जाम हो आपकी यूपीएससी की, राइट? इकोनॉमिक सब्जेक्ट नहीं, हिस्ट्री पॉलिटी, एनी सब्जेक्ट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, तो इस टाइप के ओपिनियन बेस्ड, फैक्ट बेस्ड एंड ये. So active recalling is not, and recalling. And now in the next slide, I will tell you what is recalling. I will make you aware how can you recall. There are two kind of recalling methods, right? Usually there are two kind of recalling methods. First is active method, and second we do from our childhood, that is passive, right? Passive method. So this passive method include rote learning. Rote learning, right? This passive method include rote learning. And what is rote learning? What is rote learning? Rote learning means you are recalling any topic or concept, recalling any topic or concept through. बेस्ट मेथड क्या हो सकता है? ये तीन आप करते होगे. पहला नोट मेकिंग, राइट? दूसरा highlighting that note, right? And तीसरा rereading, again and again reading that concept. So there was a research on this passive method learning, recalling method. Usually, matlab most of the students do this thing to complete any subject in UPSC. But I told you, UPSC doesn't want fact. Yes, they want to, we have to wrote anything into some extent, right? किसी चीज को रट्टा हम लोग को किसी extent तक करना है, but not completely, because क्वेश्चन जो है ओपिनियन बेस्ड दे आर आस्किंग, राइट? सो ये जो पैसिव मेथड है, रोट लर्निंग मेथड, यूजुअली हम ऐसे ही किसी कंसेप्ट को बार बार याद रखते हैं, राइट? एंड दिस इज द वर्स्ट मेथड. वर्स्ट मेथड ये मैं नहीं बोल रहा, दिस इज रिसर्चर, राइट? जो साइकोलॉजिस्ट है नेम पीटर ब्राउन has proved, he is psychologist, has proved in his book that make it stick. In this book, around 20 research papers he have written. I'm telling you the method कि कैसे आप किसी भी सब्जेक्ट को, this is the first class methodology of reading for UPSC, right? 20 research paper he published, and he said that the passive method for rote learning is the worst method. And usually 90% of the crowd do this thing. They read a concept, they again just note, they highlight the concept, they reread that thing again and again. So because he's a psychologist, so he has written a book with his 20 research paper and spent around 20 years of his life on understanding that how memory works. That's why मैंने दो पार्ट में रिकॉलिंग को रखा. One is active and another is passive. I guess till here it is clear. Now we will see some, because the basic point, this is the first class, right? First session. What is this active method then? Then he used to suggest, right? So for understanding active method, first we need to understand how memory works. Just a basic 1 to 2 minutes I will discuss. See, how do we forget anything? How do we forgot anything? This is a basic, but थोड़ा biology term है.
उनके बुक से ही मैंने पढ़ के ये चीज किया है। तो रीजन फॉर मेमोरी, हाउ कैन वी, मतलब रीजन, कैसे कोई चीज हमें याद रहती है। रीजन फॉर मेमोरी, सम थोड़ा बायोलॉजी टर्म में 1 मिनट बोलूंगा कि हमारे मेमोरी में ना सिनेप्सेस बनते हैं, राइट, अंडरस्टैंड। हमारे मेमोरी में सिनेप्सेस बनते हैं, राइट, एंड ये सिनेप्सेस न्यूरॉन्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड टू न्यूरॉन्स कंबाइन, ठीक है, इससे इसको बोलते हैं हिपोकैम्प्स, हिपोकैम्पस, एंड थ्रू दिस सिनेप्सिस एंड न्यूरॉन्स हमारी मेमोरी बनती है। ये इन्होंने अपने रिसर्च में बताया, राइट। सो ये जो न्यूरॉन्स प्रोड्यूस होते हैं, ये जो न्यूरॉन्स हिपोकैम्पस, ये जो न्यूरॉन्स बताते हैं, राइट, ये बेसिकली दो चीज पे बेस्ड होते हैं, मेमोरी पे। मेमोरी के दो चीज पे बेस्ड होते हैं, या तो कोई चीज पढ़, अगर आप उसमें फ्लुएंसी है, या तो फैमिलियरिटी। ये दो चीजें आती हैं मेमोरी को पढ़ के। इज इट क्लियर? सो फ्लुएंसी, फ्लुएंसी कैसा है, मतलब आप अभी समझो मेमोरी में क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। एक्टिव मेथड विद इन 2 मिनट्स, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। फ्लुएंसी आप किस चीज में होगे, जैसे आप स्कूल गए बचपन में, जब से आपसे मैं टेबल्स पूछूं या ABCD पूछूं, राइट, तो इसमें आप फ्लुएंट हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? फैमिलियरिटी मतलब क्या हुआ कि यार ये एग्जाम में मैं पढ़ के आया था, अगर एक पॉइंट मुझे कोई बता दे तो मैं पूरी आंसर लिख दूंगा। ये होता होगा आपके साथ बहुत बार कि आपको कोई चीजें पढ़ा हुआ फेमिलियर लग रहा होगा। तो मेमोरी इस दो चीज पे वर्क करता है, एक तो 100% जो चीज पे हम फ्लुएंट हैं, और एक जो फैमिलियरिटी है कि हाँ ये देखा देखा सा लग रहा है, अगर एक दो वर्ड मुझे आ जाए तो मैं लिख दूंगा, होता होगा, राइट। तो फैमिलियरिटी इज व्हाट, कि ये सीन है, सीन बट नॉट फ्लुएंट, दिखा दिखा सा लग रहा है और ये फ्लुएंट है। तो ये इन्होंने अपने बुक में ये दिखाया कि ये जो पीछे मैंने आपको बताया, दिस मेथड, पैसिव मेथड, दिस पैसिव मेथड, ये यूजुअली दिस पैसिव मेथड प्रोमोट करता है फैमिलियरिटी। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? पैसिव मेथड में क्या क्या था, नोट मेकिंग, हाईलाइटिंग और रीरीडिंग, इससे आपको फैमिलियरिटी आएगा, नॉट फ्लुएंसी कम आएगा। अब उसकी रीजंस मैं बता रहा हूं क्यों। जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं पूछा पॉलिटी से, इज इट क्लियर, एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, व्हाट आर द व्हाट आर द व्हाट आर द फंडामेंटल राइट्स in the constitution, suppose in the constitution. So what you will, your brain, your memory, which is a collection of two memory synapse and two neurons, hippocampus, will synchronize it। जैसे पहले आप आर्टिकल 1 पढ़ेंगे, कोई पॉलिटी वाले आपके टीचर पढ़ाएं, फिर आर्टिकल 2 पढ़ेंगे, दिस वे आर्टिकल 3 पढ़ेंगे, राइट, एंड फिर आर्टिकल 4 पढ़ेंगे, एंड सम वे आप इस तरह जाते जाते मान लीजिए आर्टिकल 32 या 36 तक आए। सो आपकी ब्रेन आर्टिकल 1 से आर्टिकल 2 को कनेक्ट करेगी, आर्टिकल 2 से आर्टिकल 3 को कनेक्ट करेगी, आर्टिकल 3 से, एंड समहाउ इस सिंक में आपको चीजें कनेक्ट होंगी, राइट। बट व्हाट विल हैपन, तो ये आपकी फ्लुएंसी नहीं, फैमिलियरिटी हो रही है, एक कनेक्शन बन रही है चीजों को। तो अगर, लेकिन बट इन एग्जामिनेशन, इन एनी एग्जामिनेशन, नॉट यूपीएससी, बिकॉज हम तो मेमोरीज की बात करें, इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, आई टोल्ड यू मेथोडोलॉजी तो मैंने बता रखा है कि यूपीएससी कैसे पूछती है, ओपिनियन बेस्ड। इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे विल डायरेक्टली आस्क आर्टिकल 32, but how your brain will work, how your memory will work, article 1 then 2, they will try to connect this article 1 with article 2, article 3, then you will think for 5 to 6 minutes, and then you will answer 32, article 32 directly. You won't remember 30. This is the reason why passive method is the worst method, he proved, because आपको कोई भी चीजें, ये नोट मेकिंग, हाईलाइटिंग या रीरीडिंग से आपको कोई भी चीजें
कोई भी चीजें एक कनेक्शन बना के याद होती हैं। इज इट क्लियर? एंड कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इज कंप्राइज ऑफ टाइम, इज कंप्राइज ऑफ टाइम, राइट? राइट? सो इसी वजह से आई मतलब रिसर्च के अकॉर्डिंग, नॉट मैं नहीं बोल रहा, रिसर्च के अकॉर्डिंग दिस मेथड ऑफ लर्निंग इज रोट लर्निंग इज नॉट गुड, right? Because in any of the paper they will ask 16, 17, 18, 2, 3 article I am writing 5, 4, they will ask not in this sequence ki 16 के बाद 17 फिर 18, not they can ask like this, they can ask in any way, right? In any way they can ask, they can ask. Is it clear? So this passive method of learning anything is not successfully. Is it clear? Is it clear? So now let me tell you, तो सर बताइए कि क्या तब मेथड है जिसके थ्रू हम इजीली कोई भी चीज को कंसेप्ट और उसको पढ़ के ब्रेन को लर्न कर सकते हैं, दैट इज एक्टिव मेथड. सो हियर आई विल टेल यू एक्टिव मेथड. एक्टिव मेथड मीन्स एक्टिव रिकॉलिंग. एक्टिव रिकॉलिंग, एक्टिव रिकॉलिंग इज जैसे आपने जस्ट फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू, आपने इकोनॉमिक्स में मैंने आपको नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ाया, राइट? नेशनल इनकम अकाउंटिंग पढ़ाया. सो इसमें मैंने आपको 4-5 टॉपिक पढ़ाए, लाइक फर्स्ट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट? 3 मेथड्स पढ़ाऊंगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग जब बताऊंगा तो मैं ये बताऊंगा, एंड सर्कुलर एंड इंडिया, देन आई विल कम टू इंडिया. सो आपकी जो एक एक्टिव पैसिव मेथड थी रिकॉलिंग की, व्हाट इट विल डू, फर्स्ट ये क्या करेगा, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पढ़े, फिर इसको इससे लिंक करेगा, एंड इस मेथड में दे विल ट्राई टू लर्न द थिंग्स. अगर आपको एग्जाम में डायरेक्ट सर्कुलर आ गया नेशनल अकाउंटिंग में, तो यू वॉन्ट बी एबल टू, वही हो जाएगा फिर, यार एक लाइन मुझे याद आ जाएगा तो मैं पूरा आंसर लग दूंगा, तो ये रोट लर्निंग की मेथड हो गई. बट एक्टिव रिकॉल पे क्या होगा, आई एम जस्ट लेटिंग यू नो, एक्टिव रिकॉल पे व्हाट हाउ इट विल हेल्प. जब आपने नेशनल इनकम पढ़ लिया, तो बेस्ट वे फॉर एक्टिव रिकॉल कि आप इसकी इंडेक्स बनाओ, राइट? बेस्ट वे आप इसकी इंडेक्स बनाओ, ट्राई टू राइट द इंडेक्स ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, एंड इसमें आपको पता है क्या चीज है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, 3 मेथड्स, सर्कुलर एंड इंडिया के बारे में आपको बताया जाएगा नेशनल अकाउंटिंग में, इनकम अकाउंटिंग में. तो डायरेक्टली आप बोलो कि चलो मैं क्या सर्कुलर के बारे में बताऊं, तो आप ये अपने ब्रेन पे स्ट्रेस डालो, और सर्कुलर के बारे में जब आपने पूरा पढ़ लिया, बुक से पढ़ लिया, तो उसको स्ट्रेस डालो. नहीं डायरेक्ट याद आ रही है, ट्राई टू स्पेंड 10 मिनट्स, स्ट्रेस डालो डायरेक्ट कि उस टॉपिक के बारे में डायरेक्ट सोचू, लिंक करके नहीं सोचू, डायरेक्ट सोचू, एक माइंड मैप बनाओ अपने दिमाग में, एंड ट्राई टू थिंक कि 10 मिनट्स में मैं इसी टॉपिक के बारे में बोलूं. इज इट क्लियर? तो उससे क्या होगा आपको फायदा, अगर आपको नहीं आया, देन ओपन अगेन द बुक एंड देन फिर सर्कुलर देखो, फिर आंसर करो. तो इससे आपको क्या फायदा हुआ, दिस एक्टिव मेथड से आपको एक अपने से क्लैरिटी मिलेगी ब्रेन में. आपका ब्रेन कोई कनेक्शंस नहीं बनाएगा, क्योंकि ब्रेन मैंने बताया है न्यूरॉन्स के सिनेप्सिस पे वर्क करता है, राइट? तो अगर आप उसको कनेक्शंस बना के आप याद करोगे, तो एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करना इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू. इज इट क्लियर? तो आपके पास वो हमेशा एक फैमिलियरिटी टाइप की चीजें होंगी मेमोरी में कि यार इसको कहीं देखा है बट फ्लुएंट नहीं है. आपको फ्लुएंसी के लिए एक्टिव मेथड या एक्टिव रिकॉलिंग विल हेल्प. एक्टिव रिकॉलिंग विल हेल्प. अब ये एक्टिव रिकॉलिंग करेंगे कैसे, ये भी मैं बताता हूं, राइट? सी, दिस इज अ मेमोरी ग्राफ. दिस इज अ मेमोरी ग्राफ. दिस इज नॉट रिटन बाय मी, ये प्रूव्ड है. दिस इज अ मेमोरी ग्राफ, प्रैक्टिकल. ये रिसर्च पेपर से है, ये मेरी कोई रिसर्च नहीं है. तो ये 20% मेमोरी, दिस इज 40%,
this is 60%, this is 80%, and this is 90% suppose, and this is like 100%. एंड यहाँ मैंने मेमोरी परसेंटेज रखा है इन वाई एक्सिस, मेमोरी परसेंटेज, और एक्स एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ डेज, वीक एंड मंथ रखा है कि अगर कोई कंसेप्ट मैंने पढ़ाया तो वो कैसे आपको फॉल होता है। जैसे मैंने पढ़ाया एक दिन बाद, एक दिन के बाद जो आपकी मेमोरी की कैपेसिटी है वो 90% हो जाती है। आपने 100% चीज पढ़ा, बट इज प्रूवन बाय एनी रिसर्च पेपर कि वो आपका 90% हो जाता है। अगर आप उसी टॉपिक को, उसी कंसेप्ट को अगर आप एक वीक बाद पढ़ोगे, तो इट विल फॉल डाउन टू 40%। इट विल फॉल डाउन टू 40%। एंड इसी चीज को जब आप एक मंथ के बाद पढ़ोगे, राइट, उसी कंसेप्ट को, इट विल कम डाउन टू 20%। तो सी 100% से आपने स्टार्ट किया, जैसे तुरंत टीचर ने पढ़ाया, राइट, एंड उसके बाद आपकी वो चीज तुरंत एक दिन बाद ही रिवीजन करने से वो आ गई आपकी 90% पे। दिस इज नॉट गिवन बाय मी, दिस इज अ प्रूवन फैक्ट। और 1 वीक बाद 40% पे आ जाएगी, राइट, एंड 1 मंथ बाद 20% पे आ जाएगी। तो दिस इज अ मेमोरी ग्राफ। ऐसे ही हमें चीज रिकॉल होती है, राइट, ये हमारी ब्रेन की कैपेसिटी है, दिस इज प्रूवन, राइट। तो अगर आप पैसिव मेथड फॉलो करोगे तो इट विल नॉट बी हेल्पफुल। एक्टिव मेथड मैंने क्या बताया, जो आप पढ़ो उसका इंडेक्स बनाओ और पर्टिकुलर टॉपिक को आप करो। तो जब आपने एक्टिव मेथड को अप्लाई किया, यहां जैसे आपने एक दिन बाद ही एक्टिव मेथड को अप्लाई करके एक माइंड मैप बनाया, अपनी 1 पेज की, एक जो भी पढ़ा उसको एक पेज में उससे लिखा, तो ये जो 90% है ये वापस से 100% तक बढ़ेगी। फिर 1 वीक बाद फिर एक्टिव मेथड से आपने रिकॉल किया, तो ये जो 40% का ग्राफ आया ये उठ के जाएगा 90% तक। इज इट क्लियर? फिर 1 मंथ पे आपने एक्टिव रिकॉल किया तो ये उठ के फिर जाएगा ग्राफ ऊपर। तो दिस इज द मेथड बाय यू कैन डू लर्न द कंसेप्ट फॉर लॉन्ग टर्म। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है, इससे 3 टाइम्स आपकी रिवीजन भी हो जाएगी, राइट। पहला, फर्स्ट डे आपको रिवीजन करना है, एंड विद द मेथड, एक्टिव मेथड, जिसमें आपको एक माइंड मैप बनाना है हर एक, जो भी मैंने टॉपिक डिस्कशन करूंगा उसके बाद, फिर फर्स्ट वीक में करना है या फिर फर्स्ट मंथ में करना है, राइट, इन अ मंथ, नॉट फर्स्ट डे इन अ मंथ, इन अ वीक, राइट। तो दिस इज द वे that you should learn and to complete any subject. So that is why this is an introduction class I told you regarding. So now we will discuss the syllabus for UPSC, right? Because syllabus बहुत important role पर करता है. Usually I will let you know the syllabus for, right? सिलेबस फॉर यूपीएससी मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आपको सिलेबस का नॉलेज होना चाहिए। इज इट क्लियर? आप अपने सामने रखोगे, मेनली सिविल सर्विसेज की मैं सिलेबस लिखूंगा अभी आपको, और उससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। सी, और यूजुअली सिविल सर्विस के ही सिलेबस सारे एग्जामिनेशन मैंने लिखा है उसमें कॉपी होती हैं, ठीक है। तो सिलेबस, बिकॉज आपको पता है बहुत प्रीमियम एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज। सिलेबस फॉर प्रीलिम्स, यूजुअली आप ईपीएफओ वगैरह कुछ भी देखोगे, इसमें प्रीलिम्स के सिलेबस को, प्रीलिम्स में कहीं भी मेंशन नहीं रहता, प्रीलिम्स में यूजुअली आपको लिख देगा, राइट, इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट, poverty, inclusion, demographic sector initiatives. Is it clear?
एक्सेट्रा। सो क्या आपको ये सिलेबस से कुछ भी क्लियर हो रहा है? प्रीलिम्स के सिलेबस से जो मैंने लिखा है, ये सीएससी की सिलेबस है। यूजुअली सीएससी इज द मेन एग्जाम, अगर आप उसके लिए पढ़ोगे तो आपकी कोई भी पेपर इकोनॉमिक्स आराम से हो जाएगी, राइट? सो आपको ये सिलेबस से कुछ भी समझ में आ रहा है? इकोनॉमिक्स में मैं बहुत सारे मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी कुछ ही नहीं लिखा हुआ है। ओनली इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पोवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक सेक्टर्स इनिशिएटिव एंड एक्सेट्रा। सो इससे हमें कुछ भी आइडिया नहीं लग रहा है एक्चुअली सिलेबस में पढ़ना क्या है। बट व्हेन यू सी द मेन सिलेबस ना, देन यू विल हैव एक्चुअल आइडिया कि ओ इकोनॉमिक्स है क्या, राइट? सो सी, मैंने सिलेबस को इकोनॉमिक, एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक जो है यूजुअली इकोनॉमी पार्ट है, एग्रीकल्चर पार्ट है, और उसके बाद बहुत सारी चीजें हैं जो डिस्कशन में होती हैं, राइट? जैसे कि इकोनॉमी पार्ट में पहला जो मेंस का सिलेबस आप देखोगे, फर्स्ट आपकी है कि आपको आपको सिलेबस डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट करके अब आपको अपने इकोनॉमी का अपने पास रखना है। जो फर्स्ट पॉइंट है, आप देखोगे एकदम मेंशन है मेंस के सिलेबस में, इंडियन इकोनॉमी, राइट, एंड इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, mobilization of resources, growth, development and employment. This is the first, जो मैंने 3 सेक्शन में मैंने डिवाइड कर रखा है, मैं आपको बताऊंगा। द सेकेंड पॉइंट दैट विल कम इन मेन सिलेबस इज, आप देख लेना, इंक्लूसिव, मैं अपने से हैंड रिटन लिख रहा हूं कि आपको समझे, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज arising arising from it. Is it clear? And the third point in this is government government budgeting. So these are the first three sector which I told economic, right, जो कि divided रहते हैं मेन सिलेबस में, ठीक है? तो इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही होगी कि अच्छा ये डिटेल सिलेबस है इकोनॉमिक की, जिसमें इंडियन इकोनॉमी भी आ रहा है, इश्यूज रिलेटिंग टू प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट मतलब जीडीपी, ये सब के बारे में बातें होंगी, इंक्लूसिव ग्रोथ, इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। इंक्लूसिव ग्रोथ का तो गवर्नमेंट जो बजट आता है, इकोनॉमिक सर्वे आता है आपको एवरी एवरी ईयर, राइट, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे आपके, ठीक है, टॉपिक्स पूछे जाएंगे। एंड जो मेंस का सिलेबस दूसरे पार्ट में डिवाइडेड है, जो आई वांट टू ऑल ऑफ यू टू रिटेन, दैट इज द एग्रीकल्चर पार्ट। दिस इज द सेकंड पार्ट इन मेन सिलेबस। आपको ये आप देख रहे होगे, आप करंट अफेयर्स अगर इकोनॉमिक्स की देखते होगे तो एग्रीकल्चर रिलेटेड भी करंट अफेयर्स बहुत पूछे जाते हैं, बिकॉज इट इज मेजरली इन द सिलेबस। तो इसमें भी 3 पार्ट है। फर्स्ट, इट इज मेजर क्रॉप क्रॉपिंग patterns patterns in various parts of country, ठीक है? सेकंड, different different types of irrigation and irrigation system shortage। तो आप देख सकते हो जितने भी फार्मर से रिलेटेड है, सिस्टम शॉर्टेज, इकोनॉमिक में कैसे ये चीज वर्क कर सकता है, वो सारे सिलेबस में है, राइट? ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर कल्चरल प्रोडक्ट्स and issues and
related constraints, e-technology in the aid of farmers. Is it clear? So this whole is mentioned, right? Second, agriculture में mention है, right? Issue related to direct and indirect farm subsidies and minimum support prices. Public administration, sorry, not public administration, it's public distribution, distribution system objective, functioning limitation. So आपको ये सिलेबस एकदम दिमाग में होना चाहिए. That's why I'm writing revamping issues of buffer stocks and food security. Food security technology mission. So you can see the agriculture portion, right? Again, more two are there. The third one is food processing in agriculture only. I'm writing that you should understand. With me, you all should write. That's why I'm writing. मैं डाउनलोड करके पीडीएफ भी डाल सकता था, but this is not the way to understand the pattern of UPSC. India, scope and significance, location and downstream requirement. Even it is mentioned supply chain management. See, management. And the fourth one is land reforms in India. So I guess now everyone is understanding the syllabus of agriculture. Is it clear? So animal rearing, animal husbandry, everything they are asking. Everything they are asking up to the extent that you should know, right? In economic mission also, they are asking economics of animal rearing. Economics of animal rearing. So see, if you will see the prelims syllabus, you won't get that कि क्या है यार economics में पढ़ना क्या है. Actually, you won't get. But if you will say the main syllabus ना, तो I have divided the main syllabus. First is in economic part only. तो Indian economy, तब आपको समझ में आएगा अच्छा Indian economy पूरा पढ़ना है, right? Issues relating to planning, mobilization, growth, development, employment, inclusive growth issues arising from it, गवर्नमेंट बजटिंग, ये पूरा पढ़ना है पहला इकोनॉमिक पार्ट में. सेकंड एग्रीकल्चर, इसको मैंने डिवाइड किया, एग्रीकल्चर पार्ट है ये, राइट? मेजर क्रॉपिंग पैटर्न्स इन वेरियस पार्ट्स, दिस आल्सो कम country, different types of irrigation and irrigation system, shortage, transport and marketing of agriculture products. This every topic is coming in agricultural economy. We say this as agricultural economy, these four topics, right? So this is also included. The syllabus of mains is divided in first the economic term, second the agriculture economy, and the third one is again the economic.
economy. That is effects of liberalization, right? Effects of allyism, effects of liberalization on the economy, right? Changes in changes in industrial industrial policy and their effects effects on industry, on industrial growth. Is it clear? Is it clear? So it is the third section I have divided, and the second in this only infrastructure, energy, infraस्ट्रक्चर में what we have to study, energy, ports कैसे वर्क करता है, roads, airport, railways, etc. And the last one is investment models, right? Investment models. So just tell me honestly, जो भी viewers देख रहे हैं, right? उन्होंने पहले ऐसे मेंस के सिलेबस को खुद से लिख के कभी देखा? यूजुअली आप ईपीएफओ या कोई भी पेपर में आपने प्रीलिम्स की सिलेबस देखी और आपको उससे अंदाजा ही नहीं लगता कि आपको क्या पढ़ना है. सो आई हैव ब्रेक डाउन द यूपीएससी सीएसई मेन सिलेबस, एंड इसके बाद आपको समझ में आएगा कि आपको इकोनॉमिक्स में सब कुछ पढ़ना है. इंडियन इकोनॉमी में फिजिकल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी सब कुछ आ जाती है, राइट? गवर्नमेंट बजटिंग में आपको सब कुछ पढ़ना, इकोनॉमिक सर्वेज एंड एवरीथिंग. आपको एग्रीकल्चरल इकोनॉमी भी पढ़ना है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी भी पढ़ना है, रिफॉर्म्स वगैरह पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, एवरीथिंग यू ऑल हैव टू स्टडी, राइट? लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, दिस 4 फैक्टर इन एग्रीकल्चर इकोनॉमी. फिर अगेन इकोनॉमी जो बच गया लास्ट में, पोर्ट्स वगैरह, इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी. सो आई गेस कितने लोगों ने इससे पहले, जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, राइट, उन्होंने, कितने लोगों ने आज तक ये चीज अपने से डिकोड किया था? टेल मी ऑनेस्टली, राइट? सो बी वेरी ऑनेस्ट टू एवरीवन, राइट, कि कि आप कैसे चीजों को पोर्ट्रे कर रहे हो, किसी चीजों को समझ रहे हो. सो फर्स्ट इज द ब्रेकडाउन ऑफ द सिलेबस, राइट? सो इन दिस इंट्रोडक्शन क्लास आई वांट यू ऑल ऑफ यू टू नो दैट first we will break down the syllabus, right? And in this way we are going to see the methods. So I told you in the first understanding also, understanding of the methodology, importance of economy in UPSC समझ में आया आपको, right? Syllabus मैंने बताया. Role of PYQ I will tell you how, what role of PYQ कोर्स में आपको एक्सपेक्ट मैं बता रहा हूं, एंड दिस 3 पॉइंट्स आई एम टेलिंग यू. रोल ऑफ पीवाईक्यू, व्हेन वी विल स्टडी द टॉपिक्स, मैं पीवाईक्यूज आपको दिखाते जाऊंगा एंड यू विल कम टू नो कि कैसे कैसे रोल ऑफ पीवाईक्यू है. एंड इस पीवाईक्यू में मैं बता रहा हूं कि रोल ऑफ कितने से कितने ईयर्स की पीवाईक्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, राइट? तो सी, so this is the syllabus. If the main syllabus you will see the great description of economy. So कोई भी सब्जेक्ट आप पॉलिटी उठा रहे हो, हिस्ट्री उठा रहे हो, उसकी मेंस की सिलेबस को देखो, प्रीलिम्स की सिलेबस से यू वोंट गेट द आइडिया कि एक्चुअली में पढ़ना क्या है. इज इट क्लियर? सो नाउ मेरे से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम दिस ऑनलाइन क्लासेस, क्लास मेथोडोलॉजी, राइट? पॉइंट वाइज आई विल टेल यू. फर्स्ट पॉइंट इज फोकस, क्या है? On concepts. Whatever concepts I will teach in economy and agricultural economy. Is it clear? Second, conceptual clarity over, I told you, रोट लर्निंग से ज्यादा है, एक्टिव पैसिव लर्निंग से इंपॉर्टेंट है रोट लर्निंग, मेमोरी के, ठीक है? इन दिस क्लास यू विल हैव दिस लॉजिकल ब्रेकडाउन. आई विल ब्रेक एवरीथिंग लॉजिकली, ठीक है? फोर्थ, जो भी मैं लिखूंगा आई विल राइट एवरीथिंग, उसकी आपको पीडीएफ मिल जाएगी. फिफ्थ,
in depth coverage ऑफ, मैं जब बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे आएंगे फरवरी में, आई विल कवर एवरी एंड ईच पॉइंट। एंड ये आपके यही बहुत बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे से मेंस में क्वेश्चंस आते हैं सिविल सर्विसेज के। आई विल कवर ऑन करंट अफेयर्स, उसी से एडेड होते हैं, राइट। टिल जो भी अभी कोर्स चल रही है, टिल दिस टाइम आपके इस कोर्स में सारे करंट अफेयर्स जो इकोनॉमिक के टर्म है वो एडेड हैं। कवरेज ऑफ पीवाईक्यूज जो मैंने बताया, इट विल बी प्रीलिम्स की सारे, नॉट ओनली ऑफ सिविल सर्विसेज, सारे प्रीवियस ईयर्स जितने भी एग्जाम्स होते हैं यूपीएससी के इन इकोनॉमिक्स, जितने पूछे जाते हैं इकोनॉमिक्स में 2023 से 2024 तक, सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस आई विल बी सॉल्विंग, जैसे जैसे चैप्टर वाइज मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है। एंड इट विल बी, so you can expect these things from my class methodology. So I hope this first session is very clear to everyone. This first session is about economics for UPSC. Agenda for first session is, yeah, for today's class is this much I told you. And from the next class, we will start what is economy. I will have a discussion and we are going to start. So thank you so much. Keep learning. Take care.